Bhajacharya Stottara Satasi Sima Esi Bhaktivedanta Swami Maharaj Shri Prabhupada Ki Jai Nityalita Krishna Vishnu Pada Stottara Satasi Sima Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Thakur Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vindiki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासारी गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिनाथ श्यामकुंद राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मायापुर धाम की गंगामाई की यमुनामाई की तुलसी देवी की भक्ति देवी की समबद्ध भक्तवृंद की श्री गदार हरिनाम संकीर्तन की Grantara Srimad Bhagavatam Ki Nitai Gautamanandi. All glory to the Assembled Devotees. All glory to the Assembled Devotees. All glory to the Assembled Devotees. All glory to Shri Guru, Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, 9th chapter, text number 50. हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के 4वें स्कंद अध्याय 9 और अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का जन्म। Vayastanavyam Sushava Nitra Che Salile Shivai Tada Vishchanamamavyam Vira Vira Suvomu Ayastanabhyam Sushava Nityajay Salile Shivai Tada Vishchan Manabhyam Vira Vira Suvomu Manabhyam Sushava Salile Shivai Vishchan Manabhyam Ayastanabhyam Sushava Yatra Jay Salile Shive Vishchan Manabhyam Vira Vira Suvomu Ayastanabhyam Sushava Yatra Jai Salile Shivai Ayastanabhyam Yatra Jai Salile Shivai Vishchan Manabhyam Vira Suvomu Vaishnavi Ayastanabhyam Jai Salile Shivai
विशिष्याभ्यम् वीरा वीर शुभोमु रास्तनाभ्यां सुशाला सविदे रामशिष्याभ्यम् वीर वीर शुभोमु पाया स्थानाभ्याम दोनों स्तनों से सुशाव बहने लगा, नेत्र जय नेत्रों से सलिले अश्रु की धारा, शिवे शुभ तदा उस समय अविशिष्यामानाभ्याम ठीक कर वीर हे विदु, वीर सुभा वीर को जन्म देने वाली माता का मुँह लगातार अनुवाद। हे विदुर, सुनिए कि एक वीर की माता थी। उसके अश्रुओं ने उसके स्तनों से बहने वाले दूध की धारा के साथ मिलकर जो महाराज के सार शरीर को भिगो लिया। ये परम मांगलिक लक्षण का तात्पर्य। जब देवों की स्थापना की जाती है तो उन्हें दुग्ध दही तथा जल से स्नान कराया जाता है और ये संस्कार अभिषेक उत्सव कहलाता है। इस श्लोक में यह विशेष उल्लेख है कि सुनीति ने नेत्रों से बहकर आने वाले अश्रु सर्व कल्याणकारी थे। अपनी प्रिय मां द्वारा किए गए इस अभिषेक उत्सव की कल्याण इस बात की सूचक थी कि निकट भविष्य में ध्रुव महाराज को उनके पिता का सिंहासन मिलेगा। ध्रुव महाराज के देह त्याग की कथा यह है कि उनके पिता ने उन्हें अपनी गोद में बैठाने से मना किया, तो ध्रुव ने दृढ़ संकल्प किया कि जब तक उन्हें पिता का सिंहासन प्राप्त नहीं होगा वे घर नहीं आएंगे। अब उनकी माता द्वारा संपन्न ये अभिषेक उत्सव इसका सूचक था कि वे महाराज उत्तम पाद का स्थान ग्रहण करने वाले हैं। इस श्लोक में आगत वीर सुबह शब्द भी महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है वीर की माता, और ये ध्रुव की माता के लिए प्रयुक्त है। दुनिया में अनेक वीर हैं, किंतु ध्रुव महाराज से उनकी कोई क्षमता नहीं, क्योंकि वे न केवल इस ब्रह्मांड के महान भक्त भी थे, भक्त एक महान वीर भी होता है, क्योंकि वह माया के प्रभाव को जीत लेता है। जब भगवान चैतन्य ने रामानंद राय से संसार के सबसे प्रसिद्ध मनुष्य का नाम पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो भी भगवान का महान भक्त है वही सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति माना जा सकता है। ओम ज्ञान निरंजना शलकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टां स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति स्वापरं कृतं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I'm very happy to be here in this Shri Shri Radha Giridhari Mandir again. He is famous for lifting Govardhan. So that means that this verse is speaking about heroes. But the greatest hero is Krishna. He's lifting Govardhan. And if we want to please Giridhari, we also should become heroes. So he's lifting Govardhan. We should at least lift a book bag. And then, actually, because a book bag may even be heavier than Govardhan. Because these books are not actually books, but they are incarnations of Krishna. And within Krishna is contained all the three worlds. Within Krishna, all the three worlds are contained. So how heavy are these bags? One book is so heavy and heavy with transcendental knowledge. So Srila Prabhupada, in his purport, he emphasizes that Dhruva Maharaj had some ambition. This was also discussed by Srila Prabhupada a few verses back, previous. Specifically, when he bows down to Suruchi. And it was very, she herself was overcome by his humility. Overcome by his humility. Even though previously she had rejected him. So this shows sometimes we see, we in our preaching or in our service, we may meet many proud people. And so we may sometimes meet proud devotees. But they can be conquered by humility. And also another reason that Dhruva Maharaj took a very humble position, he himself was very proud. And Srila Prabhupada mentions here that Dhruva Maharaj would not be satisfied when under the influence of pride. He would not be satisfied until he sat on the throne of his father. But his pride was so great, so that he wanted even a better kingdom than his father. He wanted a better kingdom than his grandfather.
बड़ा राज्य चाहिए था अपने दादा से भी। That means he wanted something greater than the universe. तो उससे ये जगत से भी बहुत बड़ा स्थान चाहिए था उन्हें। And actually, indirectly, he wanted Krishna or Vishnu. तो इसलिए वो भगवान विष्णु को प्रदान किया। And because of that, he not only got darshan of Vishnu, but he got a planet better than the universe. हाँ, तो इस कारण उनको केवल मात्र भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, पर इस जगत से भी उनको श्रेष्ठ चीज प्राप्त हुआ। Although it was smaller than the universe by quantity, it was greater than the universe by quality. तो हो सकता है कि भौतिक जगत के दृष्टिकोण से वो छोटा जगत हो, पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो बहुत ऊंचा था। So he humbled everyone by his humility. तो सामने वालों को उन्होंने झुका दिया अपने विनम्रता के द्वारा। And he is as it says here, Virdasu, a great hero because of his humility. This was his greatness. तो यहाँ वीर सूर्य उनके लिए कहा गया है कि उनकी विनम्रता के कारण। And therefore, when Suniti embraced him, milk was flowing from her breasts. तो इसलिए जब भी सुदति उनको आलिंगन किए तो उनके स्तन से दूध बहने लगा। And this was a abhishek. और ये एक अभिषेक हो गया। Just like when Chaitanya Mahaprabhu first manifested his identity to Shiva. Of course, I'll go ahead and say that much. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो वास्तविक रूप है उन्होंने प्रकट किया श्रीवास को। Actually, he first manifested his identity to Advaita Acharya. हाँ, नहीं, उन्होंने सबसे प्रथम अपना मूल स्वरूप उन्होंने अद्वैत आचार्य को प्रकट किया। But that was a secret revelation. तो पर वो एक गोपनीय चीज था। When he revealed himself to Shiva's Thakur, all family members saw, all the servants saw. He was indicating at that point, now I will reveal who I am to my devotees. पर जब भी श्रीवास आनंद में उन्होंने खुलेआम श्रीवास ठाकुर को और उनके परिवार के सामने वो अपने मूल रूप में प्रकट हुए। Actually, Advaita Acharya knew who he was even before he took birth or before he appeared. तो अद्वैत आचार्य को भी ज्ञात था क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म लेने से पहले। But in ecstasy, he forgot. पर वो भावुकता के कारण वो भूल गए। So then he actually came into the home of Srivas and he said, "Who are you worshiping?" He was worshiping Lord Nrsimhadev. वो श्रीवास ठाकुर के घर पे और बोले कि तुम किसकी आराधना कर रहे हो? वो नरसिंहदेव जी का आराधना कर रहे हो। And then Lord Chaitanya sat on the throne, on the altar. He said, "No, you should worship me." और वो वेदी पर बैठ गए और बोले कि नहीं मेरा पूजा करना चाहिए आपको। The Lord appears in a form that is most suitable for the desire of his devotee. तो भगवान श्री कृष्ण उसी अवतार को प्रकट करते जो उनको के लिए आवश्यक है। Lord Brahma, he says that Swam Bhakti Yoga Paribhavita Hrid Saruja Ase. He says that the Lord is very captured by the loving and total loving service and total surrender of his devotee. तो इससे ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं भक्तों के प्रेम से और भक्तों की प्रेममयी सेवा से। And he installs himself in the heart of the devotee. और इस तरह से भगवान अपने आप को भक्त के हृदय में स्थापित कर देते हैं। And the devotee sees him in a very special way. और भक्त भी भगवान को विशेष तरीके से देखते हैं। Shutek Shita Patananu Nat Pumsa. That a devotee sees the Lord through hearing. तो जो भगवान को भक्त कानों के द्वारा भगवान को देखते हैं। These are the best eyes.
ये जो हमारा काम है सबसे उत्कृष्ट नेत्र है। Actually, better eye is the eye of the heart. पर सबसे उत्कृष्ट तो ये होगा कि हृदय की शक्ति। Premanjana Churi Premanjana Churi Bhakti Balochanena. That the eye of the heart can see when it is purified by pure loving devotion. हम सबसे उत्कृष्ट जो आँख है वो अपना हृदय चक्षु है, पर वो कभी देख पाएंगे जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, इसी द्वारा जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तब हम भगवान को देख पाएंगे। But to clear the pathway to the heart, then Shuddha Ikshita, you have the eyes of hearing, or Pashanti Jnana Chakshushaha, as Krishna says in Bhagavad Gita, learn to see through the ears. तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं उनको कि हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए कि किस तरह से हम आँख से देख सकते हैं। And then, when that happens, Yad Yad Diyava Udugaya Vibhavayanti, that a devotee has a desire to see the Lord in a particular way. तो इस तरह से जो भक्तों के अंदर जो तीव्र इच्छा है उस तरह से पूरा हो सकता है। Just like Dhruva Maharaj, his desire, he's a Kshatriya, and he understood the Lord as Vishnu. तो ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे तो उन्होंने भगवान विष्णु को की आराधना की। He was chanting Vishnu mantra. वो भगवान विष्णु का मंत्र उच्चारण करते थे। And therefore, Lord Vishnu manifested before him and fulfilled his desire. तो इसलिए भगवान विष्णु के सामने प्रकट हुए और उनकी इच्छाओं को पूरे किए। Because he was very much influenced by opulence. तो क्योंकि वो भौतिक चीजों से वो ज्यादा प्रभावित थे, भौतिक ऐश्वर्य से। A king, naturally, a king has so much opulence. तो हम जानते हैं कि जो राजा है वो कितने वैभवशाली होते हैं। And even though Dhruva Maharaj realized that when he saw the Lord, he realized that his desire for power and opulence was useless, like broken glass, kacham, bichinvan, api divya ratnam. And here is the divya ratna, here is the Supreme Personality of Godhead. ध्रुव महाराज जब भगवान विष्णु का दर्शन किए तो उनके अंदर जो कामना थी शक्ति प्राप्त करने का, बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करने का, उन्हें अनुभूति हुआ कि ये सारा तुच्छ है। उन्होंने इस प्रकार माना कि जिस प्रकार कांच का टुकड़ा जैसे उसका कोई मूल्य नहीं रहता है, उसी प्रकार मेरी इच्छा है और मुझे रत्न प्राप्त हो गया है। But still, he was in the mood of opulence. पर फिर भी उनका जो मूड था वो ऐश्वर्य भाव में था। And therefore the Lord gave him a spiritual planet. तो इसलिए भगवान ने उनको एक आध्यात्मिक लोक दिया। There are other devotees who were born in this in Vedic times who were great kings. तो उस कालांतर में सभी भी जो भी भक्त ऐसे जन्म लिए हैं वो काफी बड़े-बड़े राजा थे। And they actually would worship Krishna. और वो भगवान श्री कृष्ण का उपासना करते थे। But they would renounce their kingdom beforehand. तो पर वो भगवान को प्राप्त करने के लिए ये सारी चीजें ऐश्वर्य को त्याग देते थे। But usually these great kings we see through the Bhagavatam, they were worshiping mostly Lord Vishnu. श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि अधिकांश सब विष्णु का उपासना करते थे। Of course, there's Bahulashva. He was a great king, but he was worshiping Krishna. Bahulashva. The king of Mithila. No. When Krishna went to Mithila, Bahulashva greeted him, and also Shrutadev greeted him. And each one was worshiping Krishna. Bahulashva was worshiping Krishna in the mood of Dwarka with great opulence.
And Shrutadev was a poor Brahmin. He was worshipping Krishna more in the mood of, closer to the mood of Vrindavan. और सुतदेव Closer to the mood of Vrindavan. जो सुतदेव थे वो जब भी भगवान श्री कृष्ण को देखे वो तो वृंदावन के भाव से उनको देख रहे थे। So Krishna, he could not satisfy both of them in the same way. तो भगवान श्री कृष्ण दोनों को संतुष्ट नहीं कर सकते एक ही प्रकार से। And therefore he divided himself in two. इसलिए भगवान ने अपने आप को दो में विस्तार किया। One of them went with Shrutadev and the other one went with Bahulashva. तो एक सुतदेव के लिए और एक बहुलाश्वा के लिए दोनों अपने आप को प्रकट किया। And even the Narada Muni and others who were with Krishna, they also divided themselves in two and went with that particular form. This is the power of a devotee. Devotees who are totally dedicated. Devotees who are totally dedicated to the Lord, they actually, even it's stated that the cowherd boys were more powerful than Krishna. जो भक्त भगवान को जो समर्पित लेते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो यहाँ वर्णन आता है कि जो गोपालक थे गोपजन थे वो भगवान श्री कृष्ण से भी शक्तिशाली थे। They would defeat Krishna. तो वो भगवान श्री कृष्ण को परास्त करते थे। And Yashoda Mai, she also would defeat Krishna with her love. और यशोदा माता भी उनको परास्त कर देते थे अपने प्रेम से। And when Lord Brahma, he saw this, he prayed to the Lord that Yat Praya so that even though the Lord is unconquerable within the three worlds, तो जब ब्रह्मा जी ने इस चीज को देखा उन्होंने प्रार्थना किया कि भगवान हालांकि आप अजीत हो आपको कोई जीत नहीं सकता जगत में। He's conquered by the love of his devotee. पर वही पर भक्त आपको जीत लेता है अपने भक्ति के द्वारा। And so, but which devotee? What kind of devotee? और कौन से भक्त किस प्रकार के भक्त? Vidvag Bapapir Vididhan Namaste. One who gives all one's feelings, all one's words, and all one's actions, and all one's thoughts totally surrendered to Krishna. तो कौन से भक्त के विषय में बोल रहे हैं जो अपने सारे जो भाव है अपने शब्द है अपनी क्रिया है सब कुछ जो भगवान को समर्पित कर देता है। So therefore, when the Lord becomes conquered by his devotee, tat bapu pranayase sat guru anugraha, that the Lord takes the form that is most pleasing to the devotee. तो भक्त को प्रसन्न के लिए भगवान उस प्रकार का रूप लेते हैं जिससे भगवान जो भक्तों को संतुष्टि प्राप्त हो। For Dhruva Maharaj, it was Krishna. So Dhruva Maharaj, it was Vishnu. तो ध्रुव महाराज के लिए भगवान विष्णु का रूप था। For Bahulashva and Shrutadev, it was Krishna. तो बहुलाश्वा और जो श्रुतदेव था उनके लिए भगवान श्री कृष्ण। But for Srimati Radharani and the gopis in Kurukshetra, that form of Krishna was not satisfactory. तो जो कुरुक्षेत्र में जब श्रीमती राधा रानी और गोपी मिले तो भगवान कृष्ण का वो जो रूप था वो श्रीमती राधा रानी और इन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए। Even before Kurukshetra, when the gopis were searching for Krishna, one gopi, she saw Krishna hiding behind a bush. तो कुरुक्षेत्र के भी काफी पहले जब ये सब गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रहे थे तभी उन्होंने एक कुंज में देखा कि भगवान श्री कृष्ण छुपे हुए हैं। And Krishna noticed that he had been found. He was hiding, but they saw him. तो भगवान श्री कृष्ण छुपे हुए थे तभी उसको अनुभव हुआ कि गोपी ने मुझे देख लिया है। So he manifested his Vishnu form, forearm. तो उस समय में उन्होंने चतुर्भुजधारी विष्णु का रूप धारण किया।
And then the gopis came and they offered respect and said, "Have you seen Krishna?" तो जब भी गोपियों ने देखा भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण को, तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आपने हमारे कृष्ण को देखा क्या? At that time, Srimati Radharani, she was separated. She was, तो उस समय श्रीमती राधा रानी अलग थी। and then she came and she saw the Vishnu form. तो जब भी श्रीमती राधा रानी आई और वहाँ उन्होंने जब देखा चतुर्भुज विष्णु रूप को, But when Krishna looked at her, the other two arms disappeared. और जब भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु के रूप में थे, उन्होंने जैसे श्रीमती राधा रानी को देखे, उनके चतुर्भुज में से दो जो हस्त है वो गायब हो गए। He could not keep a four-arm form. He was feeling the ecstasy of Vrindavan. क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी को देख के वृंदावन के भाव में आ गए और फिर वो जो दो हाथ थे वो उसको धारण कर दिए। And therefore, in Kurukshetra, he began to preach to the devotees, to the gopis, just worship me. I'm in your heart. You can worship me like that. तो जब भी कुरुक्षेत्र में जब गोपियों से मिले तो बोले कि आप मैं सबके हृदय में हूँ, आप उस चीज का ध्यान कर सकते हो। And Radharani said, the gopis don't want to worship you. They don't want to meditate on you. They're already meditating on you. बोले कि गोपी लोग को आपके ऊपर ध्यान करने की और कोई अलग से जरूरत है, क्योंकि वो पहले से आपका ध्यान कर रहे हैं। Therefore, your proposal is not acceptable. तो आपका जो प्रस्ताव है वो स्वीकार नहीं है। And she said, as far as I'm concerned, I'm trying to forget you. और जहाँ तक कि मेरी बात है, मैं तो आपको भूलने का प्रयास कर रहा हूँ। But I can't forget you. पर मैं आपको भूल नहीं पाता। So therefore, why do you propose that I should meditate when I cannot stop meditating on you? तो आप मुझे ऐसा सुझाव क्यों दे रहे हो कि आप मेरे ऊपर ध्यान करो हृदय में, पर मैं तो चाहता हूँ कि मैं आपका ध्यान करना आपको मैं भूलना चाहता हूँ। So the Lord, Prasad Maharaj, he manifested his Lord Nrsimhadev. तो प्रहलाद महाराज के लिए भगवान नरसिंह देव जी के रूप में आए। And when we come to the platform of pure devotional service, he will manifest in the form which is just suitable for us. तो जब भी हम श्रीमद् भागवतम में से पढ़ते हैं और शुद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं, it will manifest. He will manifest in the form that is most suitable for us. तो उस रूप को धारण करेंगे जो हमारे लिए उपयुक्त है। Just like this is a standard Gaudiya Vaishnava altar. तो हम जो देख रहे हैं जो ऑल्टर में जो भगवान का रूप है, ये स्टैंडर्ड जो गौड़िया का जो स्टैंडर्ड है। That means on Krishna's side is Lord Chaitanya. तो भगवान कृष्ण के साइड में भगवान चैतन्य महाप्रभु है। Because Chaitanya Mahaprabhu is in the mood of Radharani. चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के मूड में है। And he's looking for Krishna, and therefore he's on that side looking for Krishna. तो और श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को लिए ढूंढ रही है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उस तरफ है। And Jagannath, he's looking for Radharani, so he's on that side. और जो जगन्नाथ है वो श्रीमती राधा रानी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो श्रीमती राधा रानी के पास में है। And therefore our altars are full of ecstasy, transcendental ecstasy. तो इसलिए हमारा जितना भी ऑल्टर है एक आध्यात्मिक भाव से भरा हुआ है। But Lord Chaitanya is with Nityananda Prabhu, and he is enlivening all of us to fulfill his desire. और जो नित्यानंद प्रभु है वो श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं। Lord Chaitanya's life is divided in 3 phases. तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकृतिक लीला है वो 3 भागों में विभाजित है। In Adi Leela, he is teaching, and in the beginning of Madhya Leela, he is defeating the improper philosophy. तो जो आदि लीला है उसमें देखते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रचार करते हैं, और दूसरे में हम देखते हैं जितने भी अपसिद्धांत है उसका खंडन करते हैं। And in Madhya Leela, he is inundating the world with the holy name of Krishna. वो जो पहले जब वो पूरा आदि लीला में था, और जो मध्य लीला में है और मध्य
अंत्य लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे जगत में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। And in his Antya Leela, he is experiencing the inner bliss of worshiping Radha and Krishna and glorifying them and meditating on them constantly. और जो अंत्य लीला के जो भाग है तो उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु अंदर ही भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव में उसको उसका रस आस्वादन करते थे। But Srila Prabhupada said, he says in one purport in Antya Leela, that the mission of Chaitanya Mahaprabhu is to save the fallen conditioned soul. एक जगह अंतर लीला के कोई श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन ये है, उद्देश्य ये है कि किस तरह से भौतिक जो जीव है ये मुक्त हो। His mission is not to manifest unlimited ecstasy by meditating on Srimati Radharani and Krishna. श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य नहीं था कि वो केवल श्रीमती राधा और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके और उसका आनंद ले। That we can only understand when we cultivate our internal mood of devotion. और इस चीज को हम तभी समझ पाए जब हम शुद्ध भक्ति के को अंगीकार करेंगे। But the mission of Mahaprabhu is to spread the Sankirtan movement. और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मूल उद्देश्य है वो संकीर्तन मूवमेंट को विश्व में फैलाना। And that is our duty, and therefore Srila Prabhupada emphasizes this in his purport. तो ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इसी चीज पर जोर देते हैं। He says that a devotee is a great hero because he conquers the influence of Maya. तो इसमें बताते हैं कि प्रभुपाद जी जो भक्त है वो बहुत बड़ा वीर है क्योंकि वो माया के प्रभाव को जीत लेता है। So this is, in order to spread the Sankirtan movement, we have to conquer the influence of Maya. अगर हमें संकीर्तन मूवमेंट को अगर फैलाना है तो हमें माया के प्रभाव को से जीतना पड़ेगा। And then a devotee becomes famous. और इस तरह से जो भक्त है वो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। Just like one time Srila Prabhupada was giving a lecture. In the lecture, he was speaking about that how celibacy is very important for advancing in spiritual life. तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जो ब्रह्मचारी जो जीवन है ये कितना आवश्यक है भक्ति में। And then when Srila Prabhupada was returning to his residence where he was staying, devotees were glorifying him in the car, in the automobile. They were saying, Prabhupada, you are that great hero. You are completely beyond all Maya, all illusion. And Prabhupada was just chanting Maha Mantra. And then when he got out of the car, he said, Maya is very powerful. And therefore, I always remain very busy in devotional service so that Maya cannot bewilder me. So this is Acharya. He teaches by his example. And he actually feels that way. He feels that it is only by the mercy of the parampara that I can do some service and that I can be free from Maya. When the deities opened, Srila Prabhupada would pray very intensely.
अपने समय में जब भी दर्शन होता था तो पट खुलता था ऐसे तो श्रील प्रभुपाद जी भगवान से बहुत तीव्र प्रार्थना करते थे. So one devotee decided, asked Srila Prabhupada, what prayer are you offering? तो कभी कभी भक्त उनको पूछ लेते थे बल्कि प्रभुपाद जी आप कौन सा प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से. He was thinking Prabhupada is praying to Radha and Krishna some elevated prayer. तो वो सब भक्तों को लगा ऐसे कोई दिव्य प्रार्थना कर रहे होंगे राधा कृष्ण जी. And maybe he was. No. और हो सकता है कि वो कर रहे होंगे. But he said, I am praying to Krishna that I will not fall down. और उन्होंने कहा विनम्र पूर्वक प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं गिर ना जाऊं भक्ति से. This is the example of the Acharya. तो ये एक सुंदर उदाहरण है आचार्य. And we have to learn how to serve Krishna by following our founder Acharya Srila Prabhupada. तो हमें भगवान जी की सेवा करना है तो हमें सीखना पड़ेगा कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे जो संस्थापक आचार्य उन्होंने किस भाव से भगवान की. Of course, a devotee is not looking to be famous. No. और ये तो निश्चित है कि जो भक्त है वो अपने आप को फेमस नहीं बनाना चाहता, प्रसिद्ध नहीं होना चाहता. A devotee would prefer to be unnoticed. तो जो भक्त है वो चाहेगा कि मुझे ज़्यादा जन देखे नहीं. Just like Madhavendra Puri, when he was in Remuna, he saw this wonderful milk preparation that they were offering to Gopinath. तो जब माधवेंद्र पुरी रेमुना में थे तो उन्होंने देखा कि भगवान गोपीनाथ को सुंदर पात्र में खीर चढ़ाते थे. And his devotion was so pure that he thought, maybe I will get some remnants, and by tasting those remnants, I will be able to offer the same preparation to Gopal. तो उनकी भक्ति इतनी शुद्ध थी उन्होंने ऐसा विचार उनके मन में आया कि जो भगवान गोपीनाथ जी को जो अर्पण कर रहे हैं अगर मुझे इसका स्वाद अगर चखने मिल जाए तो मैं उसी प्रकार से मैं अपने गोपाल जी के लिए भी इसी प्रकार से खीर बनाऊंगा. And then he thought, oh, how sinful am I? और दूसरे क्षण ही वो अपने मन को दिखाने लगे मैं कितना पापी हूँ. I'm thinking of taking the Lord's remnant before he is finished. No. और मैं ऐसे विचार कर रहा हूँ उच्चिष्ट लेने का उसमें से पर भगवान ने तो अभी तक मुझे उसे स्वीकार भी नहीं किया है. I don't deserve to be in front of the deity. तो मैं तो योग्य भी नहीं हूँ कि भगवान के समक्ष खड़ा रहूं. Therefore, let me go. He went and hid in the marketplace and chanted. तो इसलिए वो वहाँ से मंदिर से निकल गए और बाजार में बैठ के वो सब करने लगे. But then Gopinath woke up his priest in a dream. He said, I have hidden one pot of this kheer for my devotee Madhavendra. You will find it behind the curtain. Take it to him immediately. और पर भगवान गोपीनाथ उन्होंने जो पुजारी थे उनको सपने में कहा कि मैं अपने भक्त के लिए एक खीर का जो पात्र है मैंने पर्दे के पीछे छुपा के रखा है उसको कृपा लेके उनको दीजिए. Pujari was thinking, I'm just dreaming something, but let me just go look behind the curtain. पुजारी जब ऐसे उठे जाके तो उन्हें लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ तो उन्होंने फिर भी विचार किया मुझे एक बार जाके देखना चाहिए. And then he found that kheer. He said, oh, who is this Madhavendra? और जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश किए और खीर को देखे वो तुरंत उनको विचार आने लगा कि ये माधवेंद्र पुरी बात कौन है. So the Lord within the heart guided him to the marketplace, and he was calling out, Madhavendra, Madhavendra. But Madhavendra Puri heard that, but he's thinking, must be another Madhavendra. Who would be looking for me? और पुजारी जैसे देखे और उस समय भगवान श्री कृष्ण हृदय में उनका मार्गदर्शन करने लगे और उनको सीधा बाजार की ओर लेके गए और जो से चिल्लाने लगे कौन है माधवेंद्र पुरी, माधवेंद्र पुरी. जब ये बात माधवेंद्र पुरी बात ने सुना तो उन्होंने लगा कि मैं जैसे पीछे मेरे को कौन ढूंढ रहा होगा, कोई और माधवेंद्र पुरी होगा. Then he thought, then he said, oh Madhavendra, you are the most fortunate devotee. The Lord Gopinath has kept some kheer just for you. No. तब
पुजारी महाराज के पास आते हैं, बोले कि तुम कितने भाग्यवान हो, तुम्हारे लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं खीर चुराया है। And then Madhavendra thought, maybe the Lord, even though my desire was impure, the Lord is so merciful that He is satisfying my desire. माधवेंद्र पूरी बात विचार करने लगे कि हो सकता है भगवान ने मेरे लिए खीर चुराया हो, हालांकि मेरे अंदर जो इच्छा थी वो शुद्ध इच्छा नहीं था, पर भगवान ने फिर भी मेरे को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने मेरे लिए खीर का पात्र भेजा। And he took that kheer and he drank it and he broke the cup up into dust, and every day he would take a little bit of that cup. तो उन्होंने प्रथम तो खीर को स्वीकार किया और जो मटका था पात्र था उसको चूरमा बना दिया, उसको तोड़ के और रोज थोड़ा उसका जो मिट्टी है वो सेवन करते थे। But then he was thinking, I better leave immediately because maybe some fanatical devotee will start glorifying me when actually I'm just, the Lord is so merciful. Even though I don't deserve it, He's so merciful. Let me go immediately to Jagannath Puri. तो उन्होंने मन के अंदर विचार किया कि अब मैं इतना प्रसिद्ध हो गया, अभी कोई भी आ जाएगा भक्त और मेरा प्रशंसा करने लग जाएंगे, तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। And when he arrived at Jagannath Puri, there were hundreds, thousands of devotees, all glories to Madhavendra Puri, the great devotee of Kirchor Gopinath. तो पर जब वो जगन्नाथपुरी में गए तो वहाँ हजारों भक्त उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और सब उनकी जय जयकार कर रहे थे कि ये भक्त के लिए गोपीनाथ ने खीर चुराया है। So a devotee wants to avoid fame, but the Lord wants his devotee to be famous. तो भक्त प्रसिद्धि नहीं चाहता है, पर भगवान श्री कृष्ण उनको प्रसिद्धि देना चाहते हैं। Just like Srila Prabhupada, we glorified him and he would simply say, it is the mercy of my Guru Maharaj. तो श्रील प्रभुपाद जी का हम जब गुणगान करते थे तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि ये जो कुछ हो रहा है ये मेरे गुरु की कृपा से हो रहा है। That's all that he ever said. ये हमेशा यही चीज को कहते थे। He never took the credit. वो कभी भी जो इतना उन्होंने भव्य प्रचार किया इसका कभी भी उन्होंने श्रेय नहीं लिया। But sometimes when we're not completely pure-hearted, we want to take the credit. पर कभी-कभी हम हमारे अंदर इतनी शुद्धिकरण नहीं होने के कारण कभी-कभी हमें श्रेय के पीछे भागते हैं। But we should understand that if someone glorifies us for something we did, immediately I give the credit to Guru Maharaj. तो हमें ये समझना चाहिए कि हमने अगर कुछ भी किया है और उसका अगर श्रेय हमें प्राप्त हो रहा है तो तुरंत हमें अपने गुरु को वो चीज प्रदान कर देना चाहिए। And in this movement, we especially give credit not only to our Guru Maharaj, but always to Srila Prabhupada. और हम ऐसे जो इस्कॉन संस्था में हैं, तो जब भी हम कुछ करते हैं और उसका अगर कोई श्रेय प्राप्त होता है, तो हम केवल मात्र गुरु को नहीं, पर हमारे जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी को हम प्रदान करते हैं। And then you will become famous. और फिर इस तरह से हम भी प्रसिद्ध हो जाएंगे। You will become famous in the eyes of Krishna when you want no fame. तो आप भगवान के दृष्टिकोण से आप प्रसिद्धि को प्राप्त करोगे जब आप स्वयं प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागोगे। So when we want nothing, then Krishna gives us everything. जब भी हमें कुछ भी नहीं चाहिए तभी भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है। And when we want something for ourselves, Krishna, if he may give it because our desire is so strong. तो हम कभी जब भौतिक चीज की आकांक्षा करते हैं तब भगवान उस चीज को दे देते हैं क्योंकि हम अभी तक शुद्ध अवस्था में नहीं हैं। But we don't want that, because if you get something external from Krishna, you will not get prema bhakti. पर वो चीज की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम भगवान से ये सब चीज की अभिलाषा रखेंगे तो हमें प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं होगी। But when we simply want to satisfy the Vaishnavas and we want to glorify Krishna, then Krishna will give us everything. जब भी हम वैष्णवों की सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण हमें सब कुछ प्रदान करते हैं।
Srila Prabhupada wrote one letter in 1970 to Hayagriva saying, thank you for your words, but they do not describe me, they describe my Guru Maharaj. तो 1970 में श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार हाईग्रीव जी को पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा हाईग्रीव को कि आप मेरा बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, पर ये जितने भी प्रशंसा है ये मेरे गुरु को सूचित करता है. I was reluctant to take up his mission, but he forced me. मैं तो पीछे हट रहा था कि इस मिशन को लेने की मेरे हाथ में, पर मेरे गुरु है मुझे जो ऐसे धक्का मारते गए इस जिम्मेदारी को लेने के लिए. He told me what to do, but I was resisting. तो उन्होंने मुझे कहा कि ये चीज तुम्हें करना है, पर मैं इस चीज को रोकते नकारते रहा. But here's mercy. Nevertheless, he gave his mercy, causeless mercy. और पर फिर भी उन्होंने अपना कृपा देते गए, अहिंसा की कृपा. Therefore, whatever you have said, it belongs only to my Guru Maharaj. I am a worthless person. तो बोले कि जो भी चीज आपने कहा है वो मेरे गुरु को सूचित करता है, मैं तो बेकार हूँ. So this is the mood of a devotee. तो ये जो है ये भक्त का भाव है. Of course, we can't imitate that mood. हाँ है कि हम ऐसे भाव का अनुकरण नहीं कर सकते. Oh, I am the most worthless, I am the most fallen. But we don't really mean it. We're just saying it. तो हम कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि हम बहुत गिरे हुए पतित हैं, हम इतने अच्छे भक्त नहीं हैं, पर हो सकता है कि हम ऐसे बोल रहे हैं पर हम उस चीज को व्यक्तिगत इस चीज का अनुभव नहीं कर रहे हैं. Sometimes we're like a parrot, just repeating. तो कभी-कभी ऐसा होता है केवल मात्र तोते की तरह हम चीज को बोलते हैं पर उसकी अनुभूति नहीं कर पाते. But when that feeling actually comes from the heart, then we can understand I'm making some advancement. हाँ, पर जब भी ऐसे जो शब्दों का जब भी हमारे हृदय से कनेक्टेड रहेगा तब हम कुछ आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे. When I don't want to project myself as the greatest or the most fallen. तो जब भी हम एक चीज से बाहर आ जाएंगे कि मैं भक्त नहीं हूँ और मैं गिरा हूँ. I just want to do service. और मुझे तो केवल मात्र भगवान की सेवा करना है. I just want to fulfill the desire of Mahaprabhu, Srila Prabhupada, and the Vaishnavas. तो मुझे तो चैतन्य महाप्रभु का, श्रील प्रभुपाद जी का और जो वैष्णवों का उनका इच्छा को पूरा करना है. So this is the mood of a Vaishnava. ये है भक्तों का भाव, वैष्णव का भाव. Now one more point which is here about milk flowing from the breast of Suniti. तो और दूसरा एक पॉइंट बोलना है कि सुनीति के स्तनों से दूध बहेगा. This is out of intense affection. तो ये जब भी तीव्र स्नेह हमारे अंदर जब उत्पन्न होता है तभी इस प्रकार. Every time Mother Yashoda would see Krishna, milk would flow from her breast. तो जब भी माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को देखती तभी उनके स्तन से दूध बहने लगता. Even when she thought of Krishna, even when Krishna was 6 years old and 7 years old during Govardhan Leela and different Leela, when she would embrace Krishna, milk would flow from her breast. और जब भगवान श्री कृष्ण 6-7 वर्ष के थे जब उन्होंने गोवर्धन उठाया तो जब भी भगवान श्री कृष्ण उनको गले लगाते तभी माता यशोदा के स्तन से दूध बहने लगता. Even after Krishna had left to Mathura, when she would think of him, milk would flow from her breast. और यहाँ तक भी जब भी भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए और माता यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती तभी उनके स्तनों से दूध बहने लगता. This is the nature of affection. When Krishna was causing this to happen, this was actually liquid bliss. तो ये जो है ना ये स्नेह का स्वभाव है और इस तरह से जो भाव है वो ये तरल पदार्थ से बहता है. But even modern medicine has detected that even sometimes ordinary women, when they're feeling so much motherly affection, their breasts may fill up with milk. तो
तो यहाँ भौतिक जगत में भी जब भी यहाँ की जो माता है अपने बच्चों को जब भी आलिंगन करते हैं तभी उनके स्तनों से भी दूध रह सकता है. I'm also making this point about the cows. तो ये गौओं के विषय में भी They are mothers, and therefore, if we treat them as mother and not as a milk machine, then they will give so much more milk. तो यहाँ जो गौ माता है, अगर गौ माता को भी हम माता के रूप में उनको आदर दें, उनसे स्नेह रखें, तो और ना उनको एक दूध का मशीन ना समझकर उनको स्नेह करें, तभी स्वाभाविक रूप से जो गौ माता है वो दूध प्रदान करेगी. What was Krishna doing all day? Taking care of the cows. भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे अपनी लीला में? पूरे दिन वो गौओं की देखभाल करते थे. And sometimes we're so busy that we put the cows in the hands of ordinary workers. और हम कभी ऐसा होता है कि गौशाला संभालते हैं पर व्यक्तिगत जो उसको संभालने का चीज है किसी दूसरे को दे देते हैं. And they don't have intense love for the cows, and therefore the cows give less milk. और वैसे लोगों के हाथ में दे देते हैं जिनको गौ माता से प्रेम नहीं है, और ऐसे लोग जब भी उनका देखभाल करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो गौ माता है वो कम दूध देती है. So we have to rethink how are we caring for the cows. तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम गौ माता का किस प्रकार ख्याल रखते हैं. Even though the intention is good, oh, we need milk for the deity. So, yeah, it's good intention. तो भले कि हमारा उद्देश्य अच्छा हो, हमें विग्रह के लिए दूध चाहिए. But if we actually train the devotees every day, go and brush the cow and embrace them and feed them personally by hand, then they will give so much milk. पर अगर हम भक्तों को अगर प्रशिक्षण दे कि कैसे गौ माता को सहलाना चाहिए, उनको आलिंगन करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, तो गौ माता भी बहुत प्रचुर मात्रा में दूध देगी. So this is actually something that this verse is also teaching us, the nature of affection. तो ये जो श्लोक है ये भी चीज हमें सिखाता है कि स्नेह का तो ये जो श्लोक है तो ये हमें ये भी सिखाता है क्या स्नेह का स्वभाव क्या होता है. And not only with the cows, if we treat all the devotees with affection, they will produce so much more milk. No. पर ऐसे गौ से नहीं, अगर हम दूसरे भक्तों से भी अगर इस प्रकार स्नेह रखेंगे तो भी इतने प्रचुर मात्रा में दूध देंगे. Their bhakti will flow just like milk. So, Hare Krishna. So anyway, these are some points on this particular verse. तो ये कुछ इसके अंदर पॉइंट है जो हमने चर्चा किए. So we can stop here. क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? Any comment, any question?